Welcome to lecture number 8, segment number 2. Segment number 1 में we discussed the internal auditing standards. किस किस टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं, किस किस पे लागू होते हैं. सेगमेंट नंबर 2 में I'll discuss some specific standards with you. मैं आपको उनके नंबर बताऊंगा. I'll discuss the gist of the summary of those standards, और उसमें we'll discuss attribute standards and we'll discuss performance standards as well. So now we'll start with the attribute standards. Attribute standards क्या होते हैं? Attribute standards जो होते हैं जो define करते हैं attribute of the organization and the individual performing the audit. Attribute standards are related to the characteristics of the internal auditor, the audit function, and the organization in which internal audit is being performed. Now, the first attribute standard is number 1000. It is the purpose, authority, and responsibility. The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity must be formally defined in an internal audit charter. जब आपने internal audit start करना है, उससे पहले you have to make an internal audit charter, जिसमें आपका क्या होगा? Responsibility, authority, and purpose of the internal audit. What is the audit for? Who will be conducting the audit? And who will be responsible for making sure that the audit goes smoothly. So this all will become part of the internal audit charter, which should be consistent with the mission of internal audit and the mandatory elements of the IPPF framework. So ये जो आपका internal audit charter define होगा, it should be in line with the IPPF financial framework. The chief audit executive must periodically review the internal audit charter and present it to senior management and the board for approval. It means कि जो chief audit executive है, उसकी ये responsibility है कि इसका वो periodically after every specific time period उसका review करे, and it should be presented in front of the senior management and BOD, ताकि वो इसको जायज़ा ले सकें कि आया ये ठीक है या नहीं. The second standard is 1010. It is the recognizing mandatory guidance in the internal audit charter. The mandatory nature of the core principles for the professional practice of internal auditing, the code of ethics, the standards and the definition of internal auditing must be recognized in the internal audit charter. ये standard भी आपको ये बताता है कि internal audit charter जो एक document है, उसके अंदर आपकी और कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल उसमें कोड ऑफ एथिक्स का होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए, इंटरनल ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन है वो सब कुछ, दीज ऑल शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर चार्टर. 1100 है इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट. इट मीन्स उस पर किसी किस्म का किसी और का कोई इन्फ्लुएंस ना हो. And the internal auditor must be objective in performing their work. Objective means they should be unbiased, and they should solely concentrate on the scenario in front of them, the facts and figures they have, and the rules they have to follow. And accordingly, they should come up with the opinion. That is called objectivity. Now, 1110 is your organizational independence. The chief audit executive must report to a level within the organization that allows the internal audit activity to fulfill its responsibilities. It means that कि आपका जो चीफ एग्जेक्टिव है ऑडिट का, वो एक इतने रीजनेबल लेवल पे जाके रिपोर्ट करता हो कि किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो आपके इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस पे और उसकी इंडिपेंडेंस. The chief executive
audit executive must confirm to the board at least annually the organizational independence of the internal audit activity, or he should the internal chief executive of the audit committee should annually discuss the independence with the board of directors and the senior management. Now 1111 is your direct interaction with the board. The chief audit executive must communicate and interact directly with the board. It means जब आपका chief audit executive इंटरेक्शन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, तो वो डायरेक्ट हो, उसमें किसी किस्म की कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, ताकि वो अपना ओपिनियन डायरेक्टली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आगे पेश कर सके. 1112 is your chief audit executive roles beyond internal auditing. बहुत दफ़ा चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव को इंटरनल ऑडिट से आगे भी उसके स्पैन से बाहर भी कोई रोल दिया जा सकता है, बट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट वो एडिशनल रोल होने की वजह से चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव जो है उसकी पोजीशन, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट ना हो. नाउ 1120 is your individual objectivity. Internal auditors must have an impartial, unbiased attitude and avoid any conflict of interest. It means कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसी वो impartial हो, unbiased attitude हो, उनका attitude किसी भी एस्पेक्ट से बाइस्ड नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि वो किसी को अनड्यू फेवर दे रहे हैं या वो किसी को अनडू साइड ले रहे हैं. एंड दे शुड अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जहाँ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा दैट विल ऑलवेज इफेक्ट योर फाइनल ओपिनियन एंड दैट विल ऑलवेज इफेक्ट योर जजमेंट. 1200 इज़ दी प्रोफिशेंसी एंड ड्यू प्रोफेशनल केयर. ये एक सीरीज़ है, जैसे 1100 सीरीज़ आपसे अभी मैंने डिस्कस की थी, तो जो आपसे मैंने डिस्कस की थी 1000 सीरीज़ और फिर मैंने आपसे डिस्कस की थी 1100 सीरीज़. नाउ सेम वे नाउ विल डिस्कस सीरीज़ 1200. 1200 जो है इट इज़ प्रोफिशेंसी एंड ड्यू प्रोफेशनल केयर. Engagements must be performed with proficiency and due professional care. Now 1210 defines what is proficiency. Proficiency is that the internal auditors must possess the knowledge, skills and other competencies needed to perform their individual responsibilities. It means उनकी जो अपना capacity to work है, उनका जो अपना educational level है, उनका जो अपना skill set है, it should be in line with the requirement of the job. The internal audit activity collectively must possess or obtain the knowledge, skills and other requirements needed to perform the responsibilities. Now 1220 defines the due professional care. Internal auditors must apply the care and skill expected of a reasonably prudent and competent internal care auditor. Due professional care does not imply infallibility. It means कि due professional care है कि whenever you are performing the audit, it is expected कि आपका एक reasonable prudence attitude होगा और competence होगी. This is what is expected of an internal auditor, keeping in mind the due professional care requirements of the internal auditing process. Now 1300 is quality assurance and improvement program. The chief audit executive must develop and maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of internal audit activity. It means that within the organization, the chief audit executive he has to make sure that आपकी constant कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, आपकी कांस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है, आपकी कांस्टेंट आपको ऐसे ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, ऐसे लेक्चर्स मिल रहे हैं विच कैन इम्प्रूव द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी एज अ होल. इसमें इंटरनल ऑडिटर्स भी आएंगे, इंटरनल ऑडिट कमेटी भी आएगी, इंटरनल जो आपका चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव है हिमसेल्फ विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस. नाउ दीज आर सम ऑफ द attribute standards that we have discussed. और भी बहुत से attribute standards हैं, but I have only chosen a few
ताकि मैं आपको उसका ओवरव्यू दे सकूं। इसके साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट इसका डॉक्यूमेंट ईमेल कर दिया है, विच यू कैन रीड फॉर योर नॉलेज एंड फर्दर स्टडीज़ एंड further exploration of this topic. Thank you.